Hello everyone, good evening and welcome to Sri Ram's IS initiative on Unacademy UPSC Articulate channel. This is me, Sanadat Bhardwaj, bringing to you the next and the last lecture in the series of Science and Tech. Guys, after this session, we are going to start with another initiative. Make sure that you go through both economy as well as science and tech series because we have brought you somewhere around 10 odd sessions on Unacademy UPSC Articulate channel with respect to important topics for economy as well as science and tech. Now, beyond these sessions, these latest sessions, I am going to bring to you something more relevant and more interesting in a holistic manner. So make sure that you keep following us. Also, do make sure that you are a part of the Sri Ram's IS family on an academy platform as well. So follow our entire team of faculties, which is working top notch day in, day out to make sure that the best quality material and the best possible results for you guys. Our director, Sri Ram sir, and if you cannot, this is me, if you cannot see, yes. So with this entire team of faculties, we are bringing to you top-notch level material, top-notch level concepts for your preparation, making sure that our support and our guidance helps you get through this exam. Make sure to follow all these things. Apart from that, there are certain courses that are being offered as well. Now, those courses, before I go on and talk about them, just a brief introduction about myself. This is me, my name, my qualifications, years of experience, the kind of subjects that I handle. And this is me with this vibrant and nice looking smile. Chalo. Now, if you are going to avail any course on an academy platform that is being offered by Sri Ram's IS, then you can use this referral code SRIRAMS, Sri Ram's. Now, if you use this referral code, you can get an instant 25% discount, right? Now, further, this flat 25% discount is on all the UPSC CSE subscriptions that you avail from Sri Ram's IS on an academy platform. There will be 100% coverage of the entire topic. Live classes will be there. Structured courses are being offered. Three types of courses are there. One, crash courses. Number two, comprehensive courses. Number three, optional courses. Now, as far as your say crash courses are concerned, these courses are particularly for say CSAT, for example, CSAT के लिए है. उसके साथ साथ there are courses for GS itself and then further crash course on current affairs. Current affairs का course, GS का course live हो चुका है. You can follow us on Unacademy platform. My name is Sanadat Bhardwaj and you can follow me on Unacademy platform. The spelling is SANAT, Sanat Dutt Bhardwaj. एक ही होगा और कोई होगा ही नहीं, है ना. Now, उसके अलावा there are comprehensive courses which include the foundational courses. तो foundation 2024 course भी आ गया है. Make sure that you avail that course if you are preparing for next year. And as far as optional subject is concerned, somewhere around 7 optionals are being offered. Sociology hai, public administration hai, PSIR hai, so on and so forth. Now, I would recommend that you go through these special sessions. I, in fact, had conducted 2 sessions on 15th as well as 16th of April. If you go through those sessions, you will realize that I have talked about how to choose an optional, number one. Number two, if you choose public administration optional, what can you expect? And if you do actually choose public administration optional, then the target will be a score of 350. Number one. Yes, of course, you can go beyond that as well. But target 350 is a realistic target. We don't keep utopian targets. ये realistic target रखेंगे 350. 350 के हिसाब से मैंने आपको बताया था top 10 rankers में से आप एक होंगे. Now, if that target is to be achieved, how to go on about it? For that reason, मेरी एक target 350 series भी चल रही है on an academy platform, which happens at 9 p.m. every single day. I'm covering the current aspects of the optional subject. Optional subject का भी current aspect cover हो रहा है. Imagine that. So all these series are being run. Make sure that you partake
आप अपनी हिस्सेदारी, अपनी साझेदारी इसमें सभी इनिशिएटिव्स में जरूर रखिएगा. नाउ व्हाई? बिकॉज आई वांट एंड every individual faculty, it's not just about me, it's not just about our institution, every faculty, every teacher, they want कि आप इस लिस्ट का हिस्सा बने the year you appear. पहला अटेम्प्ट एंड यू गो थ्रू. That is what our hopes are. That is what we are praying and working hard for. Be a part of our journey. Make sure that you use us for making your own preparation journey much better. ठीक है जी, चलिए. Now let's talk about the first topic, and that is Aditya L1 mission. Now Aditya L1 mission is first in a few missions that is going to happen with respect to sun. Aditya is another name, a Sanskrit name for sun. Sun ka Sanskritized name hai. And L1 is a word that has been created from Lagrange. Sorry, L-E Grange. Now Lagrange is an individual, कई जगहों पे E लगा देते हैं, वैसे generally A होता है. Now Lagrange is actually a mathematician and someone who was really important and prominent as far as history of maths is concerned. Now he had given certain mean points. कुछ mean points बताए थे उन्होंने. अब इन्हीं लेग्रांजे मीन पॉइंट्स एलएमपीस को यूज करके हमने आदित्य मिशंस प्लान किए हैं. आदित्य मिशन इज इसरोज फीट टू क्रिएट फर्स्ट क्लास ऑब्जर्वेटरी, स्पेस ऑब्जर्वेटरी फॉर सन, and this will be the first ever from India. One thing. Now, what are these Lagrange points or L's? क्योंकि ये L1, L2, L3 and L4 ये ऐसे होने वाले हैं. There are 4 payloads that are directly going to view the sun from a unique vantage point. L1, for example, is one vantage point. These Lagrange points, अच्छा यहाँ स्पेलिंग लिखे भी हुए थे. So these Lagrange points ये होते क्या है? कोशिश ये है कि आप नंबर 1, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, जितना बड़ा शरीर उतनी ज्यादा ग्रेविटी. नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन that can be exerted on that small little tiny itsy bitsy satellite जो आप भेज रहे हैं, वो कैमरा भेज रहे हैं आप, उस कैमरे के ऊपर कितना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगा, वो तो फटाफट से सन की गिरफ्त में आ जाएगा एंड इट विल नॉट सर्वाइव. And for that reason, there are certain points in space where we balance out the gravitational pull of the sun by two forces. दो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है. वन सेंट्रीपिटल, अदर सेंट्रीफ्यूगल. इन दोनों फोर्सेस को यूज करते हैं एंड एक स्पेशल ऑर्बिट के अंदर उस सैटेलाइट को मूव करवाते हैं. तो उस मोशन की वजह से एक बैलेंस क्रिएट होता है बिटवीन 1, 2 and 3, and that balance helps the satellite sustain its orbit or sustain its place. And for that reason these Lagrange points become important. Lagrange points इसीलिए important भी. ठीक है जी. अब अपने को क्या मालूम होना चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से? नंबर 1, आदित्य मिशन इज बेस्ड ऑन अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ Lagrange मीन पॉइंट्स. नंबर 1. नंबर 2, ये Lagrange पॉइंट्स जो हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन है, जिनकी वजह से बिकॉज ऑफ विच यू विल बी एबल टू thrive. The satellite will be able to thrive in that harsh environment. Now, the satellite around L1 point has a major advantage. Why? There are 4 points, and wo 4 points na they are spread across the cosmos like the points on a kite. There will be one more mission which will be L5 mission hopefully, and वो इस पॉइंट पे होगा. तो this is 1 2 3 4 ऐसा रहेगा, right? This is how the entire cosmos उसमें हमारा आदित्य मिशन spread out होगा. So this is the first observatory class space based solar mission. डायरेक्ट क्वेश्चन एज रिगार्ड्स टू व्हाट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि ये क्वाइट रिवीलिंग है. आदित्य एवरीबडी नोज इज अनदर नेम फॉर सन, बट
ये L1 का जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है. नाउ दिस पोजीशन प्रोवाइड्स ग्रेटर एडवांटेज. व्हाई? L1 helps you observe the solar activities continuously. Now L1 carries 7 payloads which will observe the photosphere, chromosphere. The chromosphere is actually the yellow part. Then the outermost layer which is the corona of the sun. अगर मान लीजिए इक्लिप्स हो जाता है तो इक्लिप्स के बाद सिर्फ कोरोना दिखता है, बाकी सब चीजें हट जाती. नाउ फोटोस्फीयर इज लाइक द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ, वैसा सही फोटोस्फीयर रहता है. नाउ 4 payloads will be there which will be released at the vantage point. vantage point होता है a point from where आप देख सकते हो, vantage point से आप सब चीजें देख सकते हो, right? I don't know how many of you guys have played Batman games. तो बैटमैन हमेशा वो एक ऐसे एन यू नो एनग्रेव्ड सा एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है, एबेकस सा बना होता है, उसके ऊपर खड़ा हो जाता है, दैट इज अ वेंटेज पॉइंट, और वहां से वो सब चीजें देख रहा होता है. नाउ 3 payloads, the remaining 3 payloads, एक तो जा रहा है, 3 payloads will carry out in situ studies of particles and fields at L1 point. The field that is being emitted or rather created around the sun for various reasons. Now, L1 mission will be inserted into a halo orbit. Halo is sun related orbit around L1 point. Halo orbit sun के आसपास एक orbit दिया जा रहा है. That is why I told you centripetal force and centrifugal force, they will be used to make sure that the gravitational pull of the sun does not pull the satellites and the entire structure into itself. What are the payloads? Not too relevant, but पढ़ लीजिएगा इसको. Number one, there is visible emission line coronagraph, VELC. Direct question can come कि ये 4 payloads से पापा, एस्पेक्ट्स, सूट एंड वेल्स, ये चारों payloads ये क्या है और what mission are they related to? These terminologies have been in news with respect to which of the following missions. ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है. सो कोरोनोग्राफ is to study the diagnostics of the corona of the sun, the outer layer, or not exactly the outer layer, but that outer covering, that ring like structure around the sun. जो आप ड्रॉ करते हो ना सन रेज, वो ऐसे 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 करके, that part is actually the corona. Now solar UV imaging telescope. Now this telescope is going to image the spatially resolved solar photosphere as well as the chromosphere in near UV spectrum. तो वहां से जो यूवी लाइट आ रही है उसको मेजर किया जाएगा और उसको स्टडी किया जाएगा. देन देयर विल बी एस्पेक्ट्स, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, solar wind particle experiment. Now this aspects is going to study the variation in solar winds. Solar winds बनती कैसे हैं, how do they generate, और let's not call it production तो production line हो जाती, generation of solar winds. If you know about it, write it down in the comment section, and if you don't, make sure to comment कि सर मुझे अगली क्लास में बताओ, मेरे को नहीं मालूम, तो स्पेशल क्लास के अंदर मैं ये बताऊंगा, I promise, but you will have to comment about it. Now, aspects studies the solar winds. अच्छा, solar winds का हमारे यहाँ auroras के साथ बहुत लिंक है, auroras, and also with respect to the atmosphere, the primitive atmosphere that the earth had, primitive atmosphere. इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. अभी रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो यूपीएससी ने पिछले कुछ सालों में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं, where they have asked about the primitive atmosphere, they have asked about certain phenomena that are happening in space, but वो हम जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं. they are really beautiful. If you go and see what are aurora australis and borealis, ये दोनों auroras को अगर आप देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत. Actually, when it is happening, nothing like it, it is divine feeling to look at them. Now, what are solar winds and how are they associated with all the terminologies that I've just talked about? You will have to make sure that you go through that. Then you also have PAPA. PAPA is Plasma Analyzer Package for Aditya, to understand the composition of solar wind, not just the variation. Aspects is for understanding the variations, studying the variations of various properties, and whereas composition, the what is this solar wind made up of and what is its energy distribution, for that you have papa. ठीक है जी. It is funny,
get over with it. Chalo. Then you also have Solexis, which is solar low energy एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर. आप यूवी को मेजर कर रहे हो तो आपको एक्सरे को भी मेजर करना पड़ेगा टू मॉनिटर द एक्सरे फ्लेयर्स दैट हैपन एट द सोलर कोरोना. तो आउटर लेयर में जो ऐसे अलग से यू नो एक तरीके से जो फ्लेयर्स निकल कर आते हैं एट एक्सरे लेवल, लेवल बोल रहा हूं मतलब एक्सरे स्पेक्ट्रम के पास जो फ्लेयर्स क्रिएट होते हैं उनका क्या हीटिंग मैकेनिज्म है एंड हाउ इट इज हैपनिंग, एंड सन स्पॉट्स क्या इससे एसोसिएटेड है, ऑल ऑफ दैट विल हैपन. एंड देन यू आल्सो हैव हीलियोस. हीलियोस इज बेसिकली हाई एनर्जी L1 orbiting X-ray spectrometer, again to understand and estimate the energy used to accelerate the particles during eruptive events. These are eruptive events. This is an eruptive event. This is also an eruptive event. The outer layer, this part is actually the corona. The innermost, you have the core. Then beyond that you have the radiative zone. The energy transmits in radiation from the core towards the radiative zone. And then you have the convection zone, because beyond radiative zone जो particles heat हो जाते हैं वो convect होते हैं, वो साथ में चलते हैं, वो they move out. Then further the outer layer is chromosphere, outer layer of convection zone, this is chromosphere. And photosphere is where the entire, which is basically the entire visible surface of the sun, the entire visible surface. इसका आउटर पार्ट अगर फोटोस्फेयर के ऊपर इक्लिप्स हो जाता है तो आउटर पार्ट कोरोना कहलाता है. ठीक है जी. चलो. देन there is also one magnetometer to understand and measure the magnitude and nature of interplanetary magnetic field. सन और उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इंपैक्ट, ये सब चीजें हम कवर करेंगे in the mission, not in the class. Chalo. Moving on to the next topic. The next topic of the day is immune imprinting. Now, over the years, various scientists they have realized कि जो there is imprinting acts which in certain imprinting that acts as a database for the immune system. तो होता क्या है, आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर कुछ इम्प्रिंटिंग हो जाती है. इट इज अ टेंडेंसी ऑफ आवर बॉडी टू रिपीट इट्स इम्यून रिस्पॉन्सेस. क्यों? क्योंकि अगर एक्स लाइक का मान लीजिए स्टिमुलस आया, अगर मल्टीपल टाइम्स आता है तो उसका रिस्पॉन्स स्टैंडर्डाइज कर देती है बॉडी. रिस्पॉन्स इज स्टैंडर्डाइज्ड. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, मजेदार चीज है, सोचो. नाउ दिस फिनोमेना वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. When scientists they noted that people who have previously had flu and they were vaccinated back then against the current circulating strain, they produced antibodies against the first strain that they had encountered. मतलब ये कि आप you can use immune imprinting for multiple purposes. Now at the time it was termed as the original antigenic sin, कि पहले पाप किए हुए तो अब भी सुधार आ जाएगा, but today it's commonly known as imprinting. Okay. चलो. Immune imprinting is a very important topic. How does it work? When our body is exposed to any virus for the first time, तो वो memory B cells generate करती है. These memory B cells are circulated through the bloodstream. This memory B cell quickly helps us produce the antibodies जब कोई सेम स्ट्रेन का वायरस आता है और हमें इन्फेक्ट करता है दोबारा से. सो बेसिकली एक डेटाबेस क्रिएट हो गया दैट व्हेनेवर एनी स्टिमुलस लाइक दिस वायरस comes into the body, how are we supposed to respond? How is the immune system supposed to respond? Now, the issue associated with imprinting is that एक similar या नॉन आइडेंटिकल वेरिएंट ऑफ वायरस अगर बॉडी एनकाउंटर करती है तो वो इफ द इम्यून सिस्टम रादर देन जनरेटिंग न्यू बी सेल्स वो मेमोरी बी सेल्स निकाल दे, प्रोड्यूस कर दे, उससे वही एंटीबॉडीज आएंगी जो पुराने स्ट्रेन से एसोसिएटेड है. नाउ probably what they are trying to say is which in turn produces antibodies that bind to the features which are found in both old and new strains. तो आप memory B cells को same memory से rather same database से you help us create, the immune system helps us create antibodies. Now this is known as
क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज, जो हालांकि मेमोरी बी सेल्स ने जनरेट की हैं, बट वो मेमोरी बी सेल्स जो है वो पिछले स्ट्रेन की वजह से थी। अब नया स्ट्रेन आ गया है, नाउ दिस न्यू स्ट्रेन is going to be targeted through these cross reactive antibodies. Now these antibodies, they do offer some form of protection, but they are not as effective as the ones अगर नए बी सेल्स प्रोड्यूस होते और इसी को ओरिजिनल वायरस मानकर इसके बेसिस पर आपकी एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज क्रिएट हुई होती. That is the issue, because the effectiveness goes down, and for that reason these memory B cells are causing a, you know, a sort of problem, particularly जब वायरस म्यूटेट करता है. तो वायरस म्यूटेट हो जाता है लेकिन हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स अडेप्ट नहीं कर पाता है. दैट इज द मेजर इशू विद इम्प्रिंटिंग. हाउ टू डील विद इम्यून इम्प्रिंटिंग? You can use some nasal vaccines against certain viruses, and also there can be spacing vaccine shots. तो थोड़ा सा आप टाइम दे दीजिए तो इम्प्रिंटिंग नहीं होगी, नहीं तो वैक्सीन की वजह से इम्प्रिंटिंग हो जाती है. दैट इज वाई इफ यू नोटिस हमने 90 डेज का गैप, 40 डेज का, 80 डेज का, ऐसे ऐसे करके गैप्स रखे, हर एक कंट्री ने रखे बिटवीन डिफरेंट शॉट्स ऑफ वैक्सीन. Then there can also be a pan sarbecovirus vaccines. Now these are also considerable efforts, particularly for SARS viruses and other related viruses जो SARS family को belong करते हैं. So you can use this technique as well, where you have for all the viruses belonging to SARS and related families, उनके लिए एक कॉमन वैक्सीन क्रिएट कर दीजिए, या आप वैक्सीनेशन के बीच में स्पेसिंग कर दीजिए, या आप नेजल वैक्सीन कर लीजिए. और यू नो it is believed that nasal vaccines, for example, they believe, the scientists, they believe that mucous membranes, they would create stronger protections despite carrying some form of imprint of past exposure. अगर आप नेजल वैक्सीन रखेंगे, अगर आप नेजल वैक्सीन एज इन उसका नेजल इंजेक्शन होगा, तो उससे बहुत इंपैक्ट पड़ जाएगा, बिकॉज राइट एट द ऑनसेट द वायरस विल हैव टू फेस सर्टेन एंटीबॉडीज एट द वेरी ऑनसेट, एट द वेरी एंट्री पॉइंट. तो ये एक सिचुएशन है. नाउ फर्दर मूविंग ऑन टू भारोस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. IIT Madras incubated startup has developed a mobile operating system which is Bhar OS. भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए भार OS. Now this is India's answer to Google owned Android and Apple's iOS, right? It is an Android open source project. It has been developed by JNK Operations Private Limited, JNK Ops. ये IIT Madras की एक नॉन प्रॉफिट organization, NPO है, and it has been incubated at IIT Madras. When I say incubated, that means it has been helped and sustained through the efforts of IIT Madras. It is being funded by Department of Science and Technology, and ministries involved in this entire process are Education Ministry, Communications, Electronics and IT Ministry, Railways Ministry, Skill Development, Entrepreneurship Ministry. They have successfully tested this Bharat or Bhar OS operating system. It is a made in India mobile operating system which is developed by IIT Madras. That is it. इसके अंदर इससे ज्यादा मत देखिएगा, ज्यादा जरूरी नहीं. एक चीज का ध्यान रखिएगा, it is Android open source project, which means it is based out of the premise for this operating system is actually Android. Android के सिर पर इसको बनाया गया है. Google has used its pre-installed apps and services to collect data, sometimes without explicitly asking a user. For that reason, there are concerns of privacy. Now, we for one want कि हमारा अपना एक indigenous system भी होना चाहिए. For that reason, this was being worked upon. But Bhar OS does not come with any pre-installed services or apps like the Google Play Store services. तो आपका डेटा जो है वो सिक्योर्ड रहता है. Privacy and security are the major concerns that are catered to by Bhar OS. And if many foreign takers take up this Bhar OS, तो definitely हमारे को benefit होगा. Moving on to the next topic, and that is Halteria. Halteria is a microscopic ciliate. It is a single-celled organism which has minuscule hair.
These are his, not his, it's here. ठीक है जी. They populate fresh water worldwide and they can thrive wholly on a virus only diet. They are virovory, मतलब वायरस खाते हैं, Halteria. Virovory is sufficient to support an organism's physiological development and even population increase. They are made up of nucleic acids, a lot of nitrogen and phosphorus. Fresh water में बहुत होते हैं. Now scientists have made a monumental breakthrough by identifying an organism which is called Halteria, which eats entirely on viruses. The dinner, breakfast, lunch, supper, high tea, everything happens with virus. Imagine that. Wonderful discovery. Now, moving on to the next and the most important topic, and that is microplastics. Guys, stay till the end, stay tuned. The reason is this is the most important one after Halteria, of course, and Aditya mission. इसके ऊपर सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. Now, scientists from South Korea, they have developed a new water purification system, particularly to filter out these microplastics. धूल प्रदूषण मिट्टी, you want to scrub your face, there are small particles that help you scrub your face. That scrubbing happens because of the microplastics in that face scrub, for example. Then there are these follicles, these particles that are existent in almost anything. In fact, these pet bottles, because they are made up of hard plastic, तो ये भी धीरे धीरे करके हमारे वाटर सिस्टम के अंदर एंटर कर जाते हैं. देयर इज क्रिएशन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स फ्रॉम द प्लास्टिक इंडस्ट्री एज वेल. देन वेस्ट जनरेशन से एफ्लुएंट ट्रीटमेंट अगर ढंग से नहीं हुई तो वहां से भी माइक्रोप्लास्टिक्स सीप इन कर जाते हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर. दो तरीके के माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी. दोनों के बारे में पढ़ेंगे, बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर दी properties and characteristics of microplastics. Number one, their density depends upon their behavior. They can float on the they can drift, they can float or they can sink to the ground depending कि भाई वो chemically inert है, hydrophobic है, hydrophilic है, depending upon the properties. But predominantly they are chemically inert because plastic है. Number one. Number two, they are hydrophobic. पानी उस पर टिकता नहीं है. They are hydrophobic. पानी से डर लगता है. तो पानी को अगर ड्रॉप उस पे हाइड्रोप्लास्टिक पे डालोगे तो वो ऊपर ऐसे सर्कुलर लेयर बना देगा, मिनिमम सरफेस कांटेक्ट रखेगा. दैट इज हाइड्रोफोबिक. कोई हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होगा तो उस पर पानी जो है फैल जाएगा, बिकॉज पानी की एफिनिटी ज्यादा होगी उसके साथ. दैट इज हाइड्रोफोबिया. नाउ दे आर फार मोर ड्यूरेबल, सस्टेन कर जाते हैं इकोसिस्टम के अंदर. डिग्रेडेशन करते हैं, कोई डायरेक्ट डिग्रेडेशन नहीं होती है इनकी, दे डू नॉट गेट डायरेक्टली डिग्रेडेड, उनको फिल्टर आउट करना ही पड़ेगा. फ्रेगमेंट हो जाते हैं, दे आर ब्रॉट डाउन टू स्मॉलर चंक्स, उनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं. एडिटिव्स की लीचिंग हो सकती है, सरफेस चेंजिंग हो सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं. डिग्रेडेशन डायरेक्टली नहीं होती माइक्रोप्लास्टिक्स की, तो ये सस्टेन करते हैं लंबे समय के लिए, लंबा चलेगा. देन ट्रांसपोर्ट, हवा, वेव्स, करंट्स, सब तरीके से दे डिस्ट्रीब्यूट इन वाटर, सॉइल एंड एयर थ्रू आउट, एंड दे ट्रांसपोर्ट थ्रू द फूड चेन फ्रॉम वन body to another. What are the harmful effects? Harmful for organisms, particularly humans के लिए भी एंड फिश के लिए भी, सबके लिए. इट इन्फ्लुएंसेस, बैड इन्फ्लुएंस है इकोसिस्टम के ऊपर. एडिटिव्स एंड मोनोमर्स की लीचिंग हो जाती है, एंड फर्दर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैपेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जहां पे असर नहीं भी होना चाहिए वहां तक असर, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि. तो जहां कोई पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, कोई एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी नहीं है, वहां तक भी माइक्रोप्लास्टिक जो है एनवायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं. दे आर potential dangers, particularly to aquatic life forms. Now, two types of microplastics: primary microplastics and secondary microplastics. Primary कौन से हैं? They are directly designed for commercial purposes. Somewhere around 20 to 30% of microplastics, they end up in the ocean. They are primary microplastics. Secondary microplastics are actually the 60 to 80% portion that end up in the ocean. Secondary microplastics zyada hai, right? Now primary, they are directly released into the nature as small particles. जैसे टायर का जो रबर है वो घिसता रहता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. हमारे कपड़ों में से प्लास्टिक का सब्सटेंस घिसता रहता है, कपड़े घिस जाते हैं ना, ऑल ऑफ दैट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. फर्दर
As far as secondary microplastics are concerned, they come from all these PET bottles, plastic bags, plastic mesh and cloth and fibers, etc. They originate from large pieces of plastics. They further fragment themselves into smaller ones. Now, where do maximum microplastics come from? Number one, 35% come from synthetic textiles. A very important fact. Synthetic textiles कौन सी हैं? The ones that we wear, जिसमें आपके nylon and all the mixed fabric जो होते हैं वो synthetic textiles. Further, now then the next is tires. The creaking of tires, wheelies मारते हैं लोग, skids मारते हैं, the kind of stunts that people play around. Not just that, the normal wear and tear of tire, it happens because of the frictional forces between the tire and the road. उससे टायर्स के पार्टिकल्स उड़ने शुरू हो जाते हैं और वो एनवायरमेंट में, एयर में ही सही बट आ जाते हैं, लैंड में आ जाते हैं. फर्दर यू हैव सिटी डस्ट. सिटी डस्ट इन्वॉल्व्स ऑल द डस्ट कमिंग फ्रॉम से योर concrete structures for example and other building material, तो वहां से आ जाता है. देन रोड मार्किंग्स, दे ऑल्सो, रोड मार्किंग्स होती हैं जो आपकी से रोड्स के ऊपर पेंट किया जाता है, रोड्स के साइड पे आपके चीजें लगाई जाती है सो दैट यू नो कि आप कहाँ पे हो और कहाँ जाना है ना. ये सारी चीजें. मरीन कोटिंग्स, जो शिप्स को कोट किया जाता है सो दैट व्हेन द शिप्स मूव थ्रू दिस हाईली कोरोसिव एनवायरनमेंट, जो समुद्री पानी है, ओशेनिक वाटर हाईली कोरोसिव है, तो उसको कोरोजन से बचाने के लिए, इरोजन से बचाने के लिए यू पेंट दैट सरफेस ऑफ दिस शिप. और उस पेंट के माइक्रोबीड्स, माइक्रोप्लास्टिक्स धीरे धीरे करके ओशन में रिलीज होते रहते हैं. सो यू हैव टू रीपेंट दी शिप, बार बार करना पड़ता है इसको. देन दी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, दैट फेस स्क्रब ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है. आई रिसेंटली गॉट मैरिड सो नाउ आई नो, अदरवाइज वी वर लाइक ऐसे 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 कर लेते थे एंड रिन सुप्रीम से भी नहा लेते थे. बट नाउ देयर इज a huge cluster of personal care products in the washroom and everywhere else. अच्छा, देन प्लास्टिक पेलेट्स सेपरेटली भी थोड़ा सा माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन करते हैं. नाउ द इशू इज दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट डू वी टारगेट? वी टारगेट दिस इंडस्ट्री. This is the least polluting industry of them all. We are not targeting this industry, the synthetic fiber or the synthetic textile industry, which is a major cause of concern. Now we have banned plastic bags, fine, but then we need to work on a lot of other things, all these things: city dust, tires, synthetic textiles. There are processes where you can actually curb on city dust or prevent it from reaching other parts of the ecosystem. So we'll have to work on that. That is why microplastics are important and relevant. Then when these small pellets, they get together, they put together, they get melted and molded to make larger plastic shapes. They are called nurdles, NURDLES. माइक्रोबीड्स मैंने आपको बताया, डेली स्किन केयर के आप स्क्रब ऑफ करते हो डेड स्किन, वो आपका माइक्रोबीड्स होते हैं. माइक्रोबीड्स आर अनदर टाइप ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स. देन फाइबर के अंदर नाइलॉन फॉर एग्जांपल, पॉलीइथिलीन टेराथैलेट, पेट पेट बॉटल्स होती हैं फॉर एग्जांपल. Then secondary microplastics, they are formed as large original plastic pieces. They also break down into millions of smaller pieces and that causes pollution. Now, what are the major sources? As I told you, 70 to 80% comes from secondary sources. Only 20 to 30% comes from primary sources, and plastics, they come from marine sources. So only 20 to 30%. Now, apart from that, of the plastic material which is coming from marine sources, फिशिंग नेट्स फॉर एग्जाम्पल, लाइन रोप्स जो मछली पकड़ने के लिए आप ऐसे फेंकते हैं, समटाइम्स अबैंडन्ड वेसल्स एज वेल, जो शिप्स डूब जाती है वहां से भी प्लास्टिक मटेरियल जो है एनवायरमेंट में एंटर कर जाता है. डिस्कार्डेड प्लास्टिक मटेरियल, ट्रैश, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, लिटर एटसेट्रा, एवरीथिंग दैट एंटर्स इनटू वाटर इकोसिस्टम और aquatic ecosystem is a challenge, and a challenge that is creating a pollution of microplastics. If you have understood till this, 80% chances are कि microplastic से related जो भी question आएगा you will be able to solve. But still थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं. Now, what are the effects on human health? Yes, there is no evidence as such कि इससे risk होता है, but still हमारे
एक्सक्रीटरी सिस्टम में माइक्रोप्लास्टिक्स 90% से ज्यादा डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, बट दैट इटसेल्फ causes impact on the environment because we take it in, we wash it off, तो ये वाटर वाले इकोसिस्टम में चला जाता है या फिर लैंडफिल्स में चला जाता है. फॉर दैट रीजन माइक्रोप्लास्टिक्स दे डोंट एंड एज सच, वो वहीं के वहीं रहते हैं. दैट इज व्हाई इट इज अ मेजर चैलेंज. ऑलराइट, चलो अभी फिलहाल फॉर नाउ let's call it a day. I'll see you guys in the next session. And guys, I request you all to subscribe to this channel and like this session. Reason is that when we are covering these important topics, when we are bringing to you these important topics, and further, even though ये last है series के अंदर, इसके बाद हम एक fresh series लेकर आने वाले हैं important topics की, जिसमें हम एक टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर करवाएंगे. Be a part of every initiative that Sri Ram's IS is bringing for you guys. Share this video with everyone. Be a part of all the follower family that we have. All the students, they have come together and they've started following faculty members from Sri Ram's IS. My name is Sanat. You can follow me on Unacademy platform. I have delivered somewhere around 15 to 20 odd sessions in that in that zone on current affairs for economy and science and tech. आपसे request है, please go on the Unacademy platform and follow us for many more things. ठीक है जी, चलिए. सेशन की स्टार्टिंग में मैंने उन सबको डिटेल में बताया है. आज अभी इस क्लास के अंदर इतना ही. आई विल सी यू गाइस अगेन वेरी सून. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय एंड थैंक यू.